Hello everyone and welcome back to the Commerce Element. Profit and loss appropriation account के blockbuster hit के बाद presenting before you the binge watch web series on the channel Past Adjustments. Now what will be common in all these web series? जो भी actors of web series है, that is the partners of the firm will be a bit बुलक्कड़ types. मतलब साल के एंड के बाद अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उनको कुछ ना कुछ याद आएगा, अरे ये तो करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हम तो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था, ओ वो तो रह गया. लाइक दैट वन और द अदर थिंग दे माइट हैव स्किप्ड और दे माइट हैव डन इन रॉन्ग वे. नाउ उन्होंने गलती की, वी आर हियर टू रेक्टिफाई दैट एरर. Now here under this sum, at the end of every question statement you will have one thing common, that is pass adjustment entry या maybe pass rectifying entry and show your calculations. We are starting with some very basic level questions and as every time we will proceed to the higher level with every next question. So the first question is, Harshad and Ashwin run the scam stores with capital of 5 and 6 lakh respectively. Interest on capital at the rate of 12% per annum was omitted. Now they are having this much capital, जिस पे डीड ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, बट वो लोग भूल गए. Now वो लोग भूल गए, we are here to rectify their error. So in every sum of past adjustment, first of all we will be making one table showing adjusted profit. Let's see how we will make. If you have two partners, you will be making table with 3 columns. You will name the table as table showing adjusted profit, and you will have Harshad, Ashwin and one column for total. अब ये जो भी पार्टनर्स के कॉलम है, पार्टनर्स के नेम से we will take it as either their capital account columns or their current accounts column, and this total will represent the firm's totals column. Now let's see how this table works. एक्चुअली उन लोगों ने मिस्टेक क्या की है, एरर क्या किया है, 12% पर एनम इंटरेस्ट देना था which has been omitted because as I told you हम इन कॉलम्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कॉलम्स कंसीडर करेंगे. तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पार्टनर्स नहीं भूलते, उनको मिलता, तो उनके कैपिटल अकाउंट में किस साइड एंट्री होती, क्रेडिट साइड. क्रेडिट करना भूल गए, अभी अंडर दिस टेबल मेक इट क्रेडिट. सो व्हाट यू विल डू इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. अगर उनका इफेक्ट होता तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होता, नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो एन एरर एंड टू रेक्टिफाई दैट एरर अब कर दो. सो देयर कैपिटल्स वर 5 and 6 lakh. 5 lakhs 12%, 12 5s are 60 and 6 lakhs 12%, it will be 72. अगर उनके कैपिटल अकाउंट्स में एंट्री होती तो 60 and 72 क्रेडिट अमाउंट से एंट्री होती, नहीं की, अभी आप कर दो. टोटल ऑफ 1,32,000. दिस मीन्स अगर 1,32,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस अगर फर्म में लास्ट ईयर एंटर नहीं हुआ, तो प्रॉफिट भी तो 1,32,000 से गलत आया होगा. So this total 1,32,000 represents wrong profit also. तो अब वो प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे, adjusted profit in these two partners capital accounts in their P&L ratio. अब P&L ratio तो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं. So we did, if P&L ratio is not given, it will be shared equally. So 132 को we will be distributing equally among partners. कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये 132 टोटल वाला कॉलम क्लोज हो जाए. पहले 132 को क्रेडिट किया, अभी 132 से कॉलम को क्लोज करना है,
तो अब 132 को डेबिट करना पड़ेगा. सो वी हैव डेबिटेड इट. अब 132 टोटल तो क्लोज कर दिया. व्हाट अबाउट पार्टनर्स? सो पार्टनर्स के अकाउंट में 132 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1. So it will be 132 upon 1:1. 1 plus 1, 2. So 132 upon 2, it will be 66. 66. Now individually partners के columns को भी close करेंगे. कैसे? 60 and 66. Two are opposite balance. One is credit, one is debit. So we will find the gap between 60 and 66. The gap is 6,000. 72 or 66, because दो opposite balances है, we will again find the gap between them. That also will be 6. Now ये gap कौन सी साइन कैरी करेगा, डेबिट या क्रेडिट? तो टू डिसाइड दैट जो भी नंबर बड़ा नंबर है 60 and 66 में से बिगर नंबर है 66, which carries a debit balance. So the gap also will have debit balance. Out of 72 and 66, 72 is a bigger number, which carries credit balance. So this 6 will carry a credit balance. And like that, your table is done. Now, the question is actually asking you to pass the adjustment entry or maybe rectifying entry. So let's see how that entry is passed. It's very simple. Even if you are supposed to pass one entry also, make the format properly and write at the top of the format that this is adjustment entry. And green wale marker se we are doing Harshad and Ashwin wala sum. So for this we consider these as partners capital account columns, because यहाँ पे आपको कोई hint नहीं दी कि उनके capitals fixed है. Because there is no hint given that the capitals are fixed, we consider capitals fluctuating है. Because capital fluctuating है, ये जो भी adjustment करना है, that we will do through their capital accounts only. So entry will be Harshad's capital account debit 6,000 to Ashwin's capital account 6,000, and for all past adjustments sum, your narration will remain common, that is being profit adjusted. And like that, we are done with the first error. Now let's see what is the mistake done in the second case. See, Bagga and Naira are partners in college stores with capitals of 10 and 5 lakh rupees. Interest on capital was to be given at the rate of 12% per annum. Instead of that, it was given at the rate of 15% per annum. Interest देना था 12% के हिसाब से, but they have given it as per 15%. मुझे आपको देने थे 12 rupees, but by mistake I've given you 15 rupees. ज्यादा रुपए दे दिए 3 rupees, that is an error. अब वो error को how I'll rectify? I'll simply take back that 3 rupees from you. Same thing will happen here also. Let's see हम इसको टेबल फॉर्म में कैसे एडजस्ट करते हैं. रेड वाला इज फॉर रेड वाले मार्कर वाला क्वेश्चन. So if you have two partners, you will be making 3 columns in your adjusted profits table. Name it as table showing adjusted profit. This will be particulars. You have 2 partners, each 1 column will occupy Bagga, Naira, and this will be totals column. Again, the question is not giving any hint that they are having fixed capital. So we assume they are having fluctuating capital. Because we assume they are having fluctuating capital, we will assume these columns to be partners capital accounts column. अभी as I told you, मुझे आपको देने थे 12 rupees, मैंने by mistake 15 दे दिए.
3 मैं वापस ले लूंगी, माई मिस्टेक विल बी रेक्टिफाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम करना था, 12 करते तो 12 क्रेडिट करते, उसके बदले व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रेडिटेड 15। 12 देना था, 15 दे दिया, 3 वापस ले लूंगी। 12% क्रेडिट करना था, 15% क्रेडिट कर दिया, 3% we will debit it and the error will be rectified. It is that simple. So see, interest on capital at the rate of 3% per annum, जो ज्यादा दे दिया है, ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, वापस लेने के लिए उसको हम डेबिट करेंगे। किसका 3%? उनके कैपिटल अमाउंट्स का 3%, 10 lakhs 3%, 5 lakhs 3%। 10 lakhs 3% will be 30,000 and 5 lakhs 3% will be 15,000। टोटल कितने अमाउंट की गड़बड़ी करी उन्होंने लास्ट ईयर में? 45,000 के अमाउंट की। नाउ 45 से प्रॉफिट में भी तो मिस्टेक आया होगा, सो अब हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। अगेन किस रेशियो में प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, दैट इज नॉट गिवन, सो वी नो दैट इट इज सपोज टू बी डन इक्वली। अब वी नो दैट ऑल्सो कि ये 45 का कॉलम, टोटल वाला कॉलम शुड गेट क्लोज्ड। 45 फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था, अब ये 45 को अगर क्लोज करना है तो वी आर सपोज टू क्रेडिट इट। So once 45 debited, once 45 credited, 45 got closed. Now this 45 will get adjusted in both of their columns in 1:1 ratio. So it will be 22,500, 22,500. Profit तो adjust कर लिया, now total भी column close हो गया। Now we are supposed to close partners column individually. 30 and 22.5, the gap is 7,500. 15 and 22.5, again the gap is 7,500. Now gap की balance decide करेंगे कैसे? bigger amount को देख के। out of this two, 30 is a bigger amount which carries debit balance, so this 7.5 will carry a debit balance. Out of this two amounts, 22.5 is a bigger amount which carries credit balance. So 7,500 भी credit balance carry करेगा. And like this, the calculation is done. Now to pass the rectifying entry, to pass the adjustment entry, we will simply debit Bagga and credit Naira's capital account. Because fluctuating capital है, adjustment capital से होगा. So Bagga's capital account debit 7,500 to Naira's capital account 7,500. And I told you for all past adjustment sums your narration will remain common, which is being profit adjusted. And you are done for 3 marks again. Now let's see the last one for today. Ranga and Billa are partners of Tihar firm with fixed capitals of 2 and 3 lakh. The profit of the firm 120 was distributed in 3:1 without providing interest on capital at the rate of 10% per annum and सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम टू रंगा। अब इसमें पार्टनर्स कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ है, एक साथ 2-3 मिस्टेक्स कर दी। व्हाट ऑल मिस्टेक्स दे हैव डन? वन थिंग न्यू इन द क्वेश्चन इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन एंड दे हैव डन 2 more omissions. कौन से 2 omissions की है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, नहीं दिया। रंगा को 20,000 पर एनम सैलरी देनी थी, नहीं दी। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नाम का एक्सपेंस शो ही नहीं किया, ऑमिट कर दिया एंड 120 का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
बिकॉज टू एक्सपेंसेस हैव बीन ओमिटेड, ये 120 का प्रॉफिट जो है वो गलत प्रॉफिट होगा. सो दिस टाइम देर आर सो मेनी मिस्टेक्स टू बी सॉर्टेड आउट. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. Two partners, we will be making 3 columns as usual, and you will name the table as table showing adjusted profit. You have 2 partners, Ranga, Billa, and you have firm's totals column. Now इन सच केसेस जहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है और बहुत सारी मिस्टेक्स के रहते प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट दैट प्रॉफिट इज रॉन्ग. इन सच केसेस वी विल फॉलो 2 स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन. फर्स्ट स्टेप, जो भी रॉन्ग हुआ है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे. कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय गिविंग द रिवर्स इफेक्ट. एंड द सेकेंड स्टेप इज, जो राइट करना था नहीं किया उसको अब करेंगे. इन आवर केस रॉन्ग क्या हुआ है? 120 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो रॉन्ग होगा बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ओमिट हो गए. सो वो रॉन्ग प्रॉफिट को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप में प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, एंड देन सेकेंड स्टेप में ये दोनों चीज़ें जो ओमिटेड है उसको हम फिर से एंटर करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट, profit wrongly distributed. In this case, they have given the ratio that the profit and loss sharing ratio between them is 3:1. So, जो wrong profit distribute हुआ होगा वो भी 3:1 में हुआ होगा. अब जब profit distribute करते हैं हम पार्टनर्स के अकाउंट में, हम उनके अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं. रॉन्ग क्रेडिट हो गया है, उसको रिवर्ट करने के लिए दिस टाइम हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे. 120 टोटल प्रॉफिट 3:1 में क्रेडिट हो गया है, उसको हम 3:1 में डेबिट कर देंगे. सो 120 अपॉन 4 इट इज 30, 30 इंटू 3 एंड 30 इंटू 1. हाफ अ पार्ट ऑफ एरर इज रेक्टिफाइड. रॉन्ग का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया. अब राइट क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% देना था, नहीं दिया, अब दे दो. देते तो क्रेडिट करते, इट्स ओके, अब कर दो. सो देयर कैपिटल्स आर 2 and 3 lakh. 2 lakhs 10%, 20, 3 is 10%, 30, a total of 50. Again one more thing you have omitted. रंगा को सैलरी देनी थी, नहीं दी. फाइन, अभी दे दो. देते तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते, नहीं किया, अब करो. 20,000, नथिंग टू हिम, अ टोटल ऑफ 20,000. नाउ प्रीवियस सम्स में वी यूज्ड टू हैड ओनली वन अमाउंट इन टोटल्स कॉलम एज ऑफ द फर्स्ट एंट्री. तो अगर फर्स्ट एंट्री में 132 को क्रेडिट किया तो सेकंड में हम उसको डेबिट करके क्लोज कर देते थे. अगर फर्स्ट एंट्री में 45 को डेबिट किया तो सेकंड एंट्री में उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देते थे. नाउ हियर वी हैव 3 अमाउंट्स, सो वो डायरेक्ट क्लोज नहीं होगा. कैसे होगा? पहले हम टोटल का टोटल करेंगे. टोटल का टोटल कैसे करेंगे? बाय क्लबिंग ऑल डेबिट्स टुगेदर, क्लबिंग ऑल क्रेडिट्स टुगेदर. वी हैव 120 एज डेबिट अमाउंट एंड बोथ 50 and 70 as credit amount. 120 debit and 70 credit, two opposite balance, so we will find the gap. 50, gap will carry which sign? Bigger numbers sign, which is 120, which carries debit sign. So this gap also will have debit sign like this. Now we have this as debit amount. Now we will adjust that profit. Because the ratio is given, we will adjust it in 3:1 ratio. अब अगर 50,000 को हम क्रेडिट करेंगे तो with 50 this column will get closed. 50 टोटल का टोटल डेबिट बैलेंस से आया, 50 को क्रेडिट कर दिया,
Total got closed. Now this 50 will get distributed in 3:1. So 50 upon 4, 12.5. 12.5 into 3. It will be 37,500 and 12.5 into 1, 12.5. Now we will individually close these columns. Same funda by clubbing all debits together, clubbing all credits together. You have 90,000 as debit, then rest of the three amounts are credit. So here Ranga is having 90,000 debit balance and these three amounts. 75.5 as credit balance. Bila is having 30,000 as debit balance and this too 42,500 as credit balance. So if we will find the gap between this, it will be 12.5, 12.5. Always the debits and credits should be equal. Now this 12.5 will carry bigger number 90's balance, which is debit. So this 12.5 will be debit. Out of this 42.5 is a bigger amount which carries a credit balance. So this 12.5 will carry a credit balance. And thus we will have 12,500 debit and 12,500 credit. And we are done with the table. Now we will journalize it. In the third case, it will be Ranga's current account debit. Why current account? Because this time they have given that their fixed capitals are this much. So adjustments when the capitals are fixed will all be made in current account. So 12,500 to Billa's current account, 12,500. Narration as usual will be same, being profit adjusted, and you are done. There are more chances of this kind of sums to be asked, wherein गलत profit distribute हो गया है and कुछ चीजें omit हो गई है. Such questions can be asked for a 3 or a 4 marker question with more brighter chances compared to this. This type of question, which is very simple, can be asked as a part of your MCQ. So I try to get you from very basic level to a bit of advanced level sum. Now I hope what all we discussed today is very much clear to you. अगले सेशन में इससे भी एडवांस वर्जन में हम जाएंगे and we will wind up the chapter. Until the next session, stay tuned and goodbye.